Good morning, everyone. We shall start momentarily. Good morning, everyone. A very warm welcome to all our participants joining us today from different places. I am Akanksha and I'll be your host for today's webinar on Beyond Boundaries Understanding Special Needs. I am delighted to have you all here as we explore, learn, and share insights on creating an inclusive environment where every child can thrive. Today, we will discuss challenges, strategies, and solutions to better understand and support children with special needs. I encourage everyone to actively participate, share your thoughts, and ask questions so that our session is interactive and meaningful. This session is also extremely valuable for parents, so I request you to share the webinar link with parents in your network as well. It will definitely benefit them too. Before we start today's session, let me take a moment to tell you a little about USO, United Schools Organization of India. United Schools Organization of India is a registered society established in 1951. It is our mandate to advance the social, cultural, and moral standards of schools in India to global levels by providing schools access to extracurricular tests, seminars, conferences, competitions, campaigns, and programs on a national platform. We aim to create global citizens by providing students and teachers alike avenues to explore their potential beyond academics. Today, as part of this vision, we are coming together to explore beyond boundaries, understanding special needs, because inclusion and understanding are at the heart of meaningful education. Now, let's take a look at the impact we are creating through our initiatives. We take immense pride in our rich legacy and the meaningful impact we have created over the past 75 years, empowering generations of students and educators, fostering inclusive education, and championing holistic development across the nation. On this slide, you can see a tree that represents the growing impact of USO across the country. Each number tells the story of our reach and efforts. We are proud to be present in 31 states, reaching over 16,000 schools and impacting more than 5.1 million students. Alongside, we work closely with 22,000 plus teachers to enhance learning experiences. Through 500 plus activities and collaborations with 50 plus partners, USO continues to foster holistic development, inclusivity, and excellence in education. This tree is a symbol of growth, collaboration, and the positive change as we are creating together. Our national activities for special schools. We have been conducting for activities for special schools nationally since 2019. We routinely partner with UN agencies and various government bodies for our activities, all of which are on a national level. In 2019, we have conducted Specially Abled Children's National Science Painting Competition in collaboration with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. In 2020, Specially Abled Children's National Poster Making Competition we have conducted in
association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. In 2021, National Science Painting Competition for Specially Abled Children we have conducted in partnership with CSI and NISPER and with UNESCO. In 2022, ABC2, that is Anybody Can Cartoon for Specially Abled Children we have conducted in partnership with Junior Diamond. In 2023, we have conducted National Drawing Competition for Specially Abled Children. And in 2024, we have conducted Art for Change and Dance E-Festival for students with special needs. In 2025, E-Mime competition we have conducted. From the year 2021 till now, we have conducted Diwali Mela for specially abled children for the Delhi NCR region. And by this, we promote inclusivity. In 2020, we have conducted again ABC2 Anybody Can Cartoon competition in collaboration with Junior Diamond. In 2021, we have conducted My Immuno Booster Recipe competition in collaboration with Glenmark Foundation and Rice Foundation. In 2020, we have conducted H2O competition in collaboration with New Delhi United Nations Education, Namami Gange and Wisdom and with Water Digest. So let us begin the webinar now, that Beyond Boundaries Understanding Special Needs. Before we move into today's discussion, let me take a moment to tell you all about this series. Before we move into today's discussion, let me take a moment to tell you about this series. Beyond Boundaries Understanding Special Needs is a national webinar series designed exclusively for special schools across India. This initiative aims to foster awareness, inclusivity, and best practices in special education by bringing together experts, educators, and caregivers. From April 2025 to March 2026, USO will host 12 insightful webinars, each focusing on a different topic related to understanding and supporting children with special needs. Covering a wide range of subjects, the series will explore innovative teaching strategies, inclusive learning environments, assistive technologies, behavioral support, and more. Let us now begin our webinar, Understanding Special Needs. That is webinar 8. Creating a supportive home environment for children with special needs. Just reminding you all, if you have any questions, please feel free to type them in the YouTube chat box. We will take them up at the end of the session. Now, to introduce our esteemed speaker today, I want to introduce our Secretary General USO, Ms. Neena Jain. I would like to invite Ms. Neena Jain to introduce our esteemed speaker. Ma'am, please. Good morning, everyone. All those who are watching us on YouTube live channel, I wish you a very, very good morning. I'm uncertain how cold it is elsewhere, but in Delhi today, it is quite chilly. So hence you see me wrapped up in a shawl and everything. Either ways, wish you a very, very good morning once again. And I am very happy and excited to introduce Professor Dr. Renu Malviya, who has joined us again for another, to continue our series in Beyond Boundaries. Dr. Malviya is the former professor and head of department, which is the Department of Education, Lady Irving College. She is also the former dean and professor, Behavioral Sciences, SGT University. Dr. Renu is an executive member of the All India Women's Education Fund Association. She is a patron of the Parikrama India and academic director as Voice for Ability. She has nearly 40 plus years of experience in teaching, training, and research, and has contributed to several national and international projects, authoring over 25 academic books, publishing work on bibliotherapy, and contributing chapters to nearly 25 books. We are really honored that she is here this morning. She is an RCI certified special educator,
mental health professional, and a CBSE master trainer, and has also led key advisory roles in disability and mental health initiatives. She continues to serve on expert committees across institutions. And hence, again, we wish a very, very warm welcome to Dr. Renu, who is today with us and will be speaking on this very interesting topic, I must say, of creating a supportive home environment for children with special needs. Dr. Renu, I hand it over to you. A very good morning to all of you. And thank you so much, Neena ji, for putting me on such a big pedestal right away. And thanks to USO I for having me here. And so let me now share my slide. We're going to talk about the school system itself is not adequate for a child with special needs or for any child. We have our home, we have our school, and we have the entire community around us. This whole ecosystem together is what makes me and what makes you. So let's peep into the houses. I could not, because of ethical reasons, take pictures of homes of children, actually, their actual homes. But as teachers and school administrators, हमें ये पता होना जरूरी है कि जब हम पेरेंट्स को हैंड होल्ड करें तो एक बच्चे को जिसको पर्टिकुलर स्पेशल नीड्स है उसे क्या चाहिए, इसकी स्पेशल चीजें उसके घर में होनी चाहिए. आज मेजॉरिटी ऑफ द स्लाइड्स में जो दिखाऊंगी उसमें 4 पिक्चर्स रहेगी. रिटन पार्ट हम बाद में थोड़ा सा करेंगे और काफी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप इमेजिन करेंगे कि एक इंडियन होम में ये चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं. आपके पास एक बहुत बड़ा मैं एक रोल देना चाहूंगी. All the teachers, all the principals, all people of the education system, you are hearing me, कि हमें कैसे उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना है. बहुत सी चीजें हमें पता है जो कि फैमिलीज को नहीं पता. बड़ी सिंपल चीजें होती हैं जो कि कोई भी फैमिली कर सकती है. तो आज मैं उसके ऊपर आपके साथ वार्तालाप करने की कोशिश करूंगी. So we come here. What is a good home environment? It is the psychological aspects, relationships, and feeling of bonding of emotions. जब हम घर जाते कैसा भी घर होता है बड़ा शांति मिलती है. मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो कोई इशू है तो उसको हमको सॉल्व करना है. Right? So that is what a child should feel. Safe, dignity, belonging, and opportunity to be themselves and to grow. इसीलिए can you look at all these photographs here? No, please back again here. पहली स्लाइड पे आप ये देखिए. This is child with visual impairment. ये भी they're happy. Look at this child. ये deaf है पर अपनी साइन लैंग्वेज से आपको पता ही है कि देयर आर मेनी साइन लैंग्वेजेस. इंडिया में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? इंडियन साइन लैंग्वेज. ऑस्ट्रेलिया में कौन सी यूज करते हैं? ऑस्ट्रेलियन साइन लैंग्वेज. थोड़ा थोड़ा सा फर्क है. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मेल को ऐसे कहते हैं और वुमेन को नथ पहनते थे ना पहले तो ऐसे कहते हैं. अब दिस इज नॉट अ ऑस्ट्रेलियन थिंग, दिस इज नॉट अ अमेरिकन थिंग. तो उनकी साइन लैंग्वेज में फर्क होगा. ऐसे ही नाउ लुक एट दिस चाइल्ड. He is on a wheelchair, but he's happy. उसका घर का environment, उसका स्कूल का environment ऐसा है कि वो लर्न कर रहा है. जब मैं इंगेज हूं, जब मैं लर्न कर रहा हूं, जब मुझे लगता है मैं ग्रो कर रही हूं तो मैं हैप्पी हूं. So this is what we need to have. So next slide में हम क्या देखते हैं? There are many more other special needs. But according to the RPWD Act 2016, 21 disabilities have been chalked out. And RPWD Act says उसमें और भी ऐड की जाएंगी. तो अभी हमारे पास ये है. इसमें से हम थोड़ों को यहाँ पर टच करेंगे क्योंकि 21 को करेंगे तो फिर हमको तो 21 दिन चाहिए ये करने के लिए. वो हम यूएसओ से कहेंगे कि एक सर्टिफिकेट कोर्स हमारे लिए तैयार करें. पर अभी के लिए हम एक एक करते हैं. उसमें हम ब्लाइंड,
फिजिक जो बच्चे व्हील चेयर पे होते हैं, जो SLD होते हैं, न्यूरोडाइवर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते करते और अल्टीमेटली उनके होम में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जब आते हैं तो पहले देखते हैं हम विजुअल इम्पेयरमेंट का। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी, और उसमें हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए। एज अ टीचर, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, आजकल बच्चे लैपटॉप पे बहुत काम करना होता है। आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये मैग्नीफाइंग कर सकता है। मैग्नीफाई, पूरी बुक है, बुक को मैग्नीफाई कर सकता है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, पर बहुत से आपके जो बच्चे हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, तो क्या उनके पेरेंट्स को ये पता भी है? क्या मैं अपने स्कूल में ऐसी कोई चीज कर सकती हूँ? या कीबोर्ड ये बहुत महंगा नहीं आता, पर उनके घरों में क्या है, ये देखिए, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसी का एक बड़ा वर्जन है ये। अब ये लाइन टू लाइन बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में ऐसा है, पर ये घर में भी तो हो सकता है। एंड अगेन दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। एक हम लेंटिंग आउट रिसोर्स रूम भी बना सकते हैं ना अपने स्कूल में, जहां पर भी इश्यू आउट, जैसे लाइब्रेरी बुक्स इश्यू होती है, अगर हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं वो इतने, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो आइडियाज दे रही हूँ, ये तो आपको पता ही है कि वो ब्रेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, ये ही आप देखिए। आजकल ये ऐसे चश्मे आते हैं, और यहाँ पर यू नो व्हाट दे हैव डन, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अगर मैं चल रही हूं तो साइड में किस तरीके की आवाज है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड हो जाता है इसमें। तो ऐसी थाउजेंड्स एक चीजें जो है वो इसमें रिकॉर्डेड है। और बिकॉज ऑफ AI, नाउ व्हेन द पर्सन इज वर्किंग, वो उसको वहां पर इंफॉर्मेशन देता रहता है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग चीज है, somebody who is blind can also see certain amount through this, and therefore can you see this grandfather कितना हैप्पी हो रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि ये ब्रेल होता है। तो कीबोर्ड, अगर एक कोई बच्चा कहता है आपके यहाँ जो विजुअली इम्पेयर्ड है, और वो पेरेंट्स आके कहते हैं कि ये घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए ना कि ब्रेल वाला कीबोर्ड है आपके यहाँ, नहीं है तो मैं कुछ कर सकती हूँ क्रिएटिवली। क्या मैं कोई लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं, कोई लेंडिंग आउट चीज हो सकती है, कोई स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं उस बच्चे के लिए। पर पहले तो पता होना चाहिए कि एक ब्रेल चीज जो की है, ब्रेल कीबोर्ड घर में होना चाहिए ऐसे बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब खाली पढ़ाई की बात नहीं करते, आगे भी जब हम खेलते हैं, सब बच्चों को खेलने का मन करता है, वही चीजों के से खेलने का मन करता है। तो नाउ यू सी, वही वाले जो स्पेक्स हैं जिससे काफी विजन दिखता है, काफी मैसेजेस मिलते हैं कि क्या हो रहा है, और तो वही गेम्स खेल रही है ये बच्चा जो कि कोई और खेल सकता है। एवरी चाइल्ड लर्न्स, हैज टू लर्न एट होम। हमको इंडिपेंडेंट बच्चे बनाने हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब खाली खाली एकेडमिक्स तो नहीं होता ना, उसमें बीइंग एबल टू डू डेली थिंग्स आल्सो। सो अगर ये अवन है, अवन को जब वो निकालते हैं तो हम कोई कपड़ा यूज करते हैं। नाउ कैन यू सी सच अ सिंपल थिंग कि एकदम से अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, उसको तो ऐसे ढूंढ के देखना पड़ेगा ना, तो वहां पर उसके आगे एक पैडिंग बनी हुई है। आंधी सिम सेम ये जो है, ये भी एक वही एक्टिविटी है जो पहले उसमें चश्मे में दिखाया था। सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन अराउंड द एनवायरनमेंट। तो अगर सेंसर्स हैं इसमें, अगर आप सीधा चल रहे हैं, आगे एक पेड़ आता है, तो इसमें वो बता देगा आपको कि आगे पेड़ है, इतना थिक पेड़ है, या कोई और ऑब्स्टिकल आ रहा है, आगे रेलिंग है, रेलिंग की हाइट इतनी है। इस ऐसी चीजें सब इसमें अंदर डॉक्यूमेंटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, कितना कुछ है।
जो बच्चे जिनके घर में जिनके जो ब्लाइंड है या विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके घर में आप काफी बार देखेंगे कि, और ये आपने देखा होटल्स में और मॉल्स में भी देखा होगा कि ये यहाँ पर कलर्ड है, जैसे ब्लू 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 है, ये किस लिए है? जो विजुअली इम्पेयर्ड है, पूरा ब्लाइंड नहीं है, तो उसको थोड़ा बहुत ये डिफ्रेंसिएशन दिखता है। ऐसे ही घरों में आगे आपने ये देखा, ये डॉट 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 वाला है, इसको बटन्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर वो पैर रखेगा, ओ मुझे वेट, मुझे फिर से अपने एनवायरनमेंट को समझना है, तो अब उसको समझना क्या है कि आगे स्ट्रेट नहीं है, उसके बाद स्टेयर्स आ रहे हैं। तो वैसे तो सब पब्लिक प्लेसेस में होता है, पर उनके घरों में भी ऐसा होता है। ये देखिए, कोई रिच वाला घर है, उन्होंने कितना अच्छा कारपेट बनाया है। अब कारपेट का एडवांटेज खाली विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं होता, कारपेट का एडवांटेज जो होता है वो हियरिंग इम्पेयर्ड को भी होता है, आगे बताऊंगी मैं। हाँ, और ऑटिस्टिक के लिए भी होता है। आप ये देखिए, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, कोई भी डिवाइस है, ये वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अगर ये कुछ लिखा है, कोल्ड हॉट जो भी लिखा है, तो वो समझ नहीं आ रहा ना, तो उसको ब्रेल में आजकल कर देते हैं और बहुत इजी है। तो इनके यहाँ इन होम्स में अगर नहीं है तो होना चाहिए। ये देखिए यहाँ 8, देखिए आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये ब्रेल में लिखे हुए हैं, तो वो तो टेक्सचर से देखते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ये देखिए, अब कोई चीज होती है, कोई खाना बनाते हैं, मैं ये बच्चों का घर है, पर बच्चे भी तो सीखना, जब एडोलेसेंट पे आएंगे वो सीखना शुरू करेंगे ना। अब मेरे पास पिक्चर्स नहीं थी, और एथिकल रीजंस की वजह से मैं घर के जो एक्चुअल बच्चों के घर थे, मैं उनकी फोटो लेके और यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकती थी, तो क्योंकि वो तो फिर गलत हो जाएगा, है नहीं, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब ये देखिए, आप एक थर्मोमीटर टाइप चीज है। अब हमें पता है कि कहाँ टच करना है, कोई आलू गर्म है तो किस पॉइंट पे, उनको तो आलू नहीं दिख रहा, तो आप उनसे ये डाला, उससे टेम्परेचर जो है वो बोल बोल देता है, ये टेम्परेचर है, दिखाने के साथ वो। अच्छा, घर में ये तो हम भी यूज करेंगे, तो हमारे लिए भी एडवांटेज है। हमेशा जो मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन या अकोमोडेशन कर रहे हैं घर में या स्कूल में, वो सबके लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ के लिए जाते होते हैं। आप ये देख रहे हैं उनके घरों में कैसा होता है। देखिए, ये अगर टोस्टर है, टोस्टर के नीचे एक ट्रे है, वो ट्रे ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, टी स्पून के ऊपर लिखा हुआ है, रेज्ड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खेलने में तो सभी को मन करता है, इस बॉल में क्या खास बात है, कौन बता पाएगा? यस, यूर राइट, इट हैज साउंड इन इट, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, और उससे जब ये रोल होती है तो वो साउंड होता है। सो दीज चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले कैच एंड कैच, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग। तो उनके गेम्स में जो है साउंड डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ ब्रेल रखी है, लुक एट दिस, किसी फैमिली ने कितना अच्छा बनाया है कि उसको उसमें बिठा दिया और एक यहाँ पर लाइन लगा दी और गोल सर्कल से उसमें वो खेल रहे, और घर के अंदर ठोकर खाते रहते, तो उससे तो ये अच्छा है ना। Simple things that are used in the home and can be used in your institution also. Next slide please. किचन में हर चीज हम लोग लेबलिंग करते हैं ना, उनके यहाँ सब ब्रेल में ऐसे लिखा जाता है, देख रहे हैं आप? यहां पर भी सब। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं द चाइल्ड ऑन अ व्हील चेयर। ये बच्चा है, स्पेस्टिक है, ये अपने सेरेब्रल पाल्सी है, इसको ये अपने हेड को भी नहीं कंट्रोल कर सकता, पर तो क्या उसको इंजॉयमेंट या लर्निंग, उसका ब्रेन तो ठीक है ना, ब्रेन तो वर्क कर रहा है, वो लर्न करना चाहता है, तो उस चीज को क्या कितना सिंपल है, वो व्हीलचेयर पे है और साथ में आपने वहां पर वो लैपटॉप लगा दिया। अब वो फिंगर वहां तक उसकी जा भी नहीं पाएगी क्योंकि उतना कंट्रोल नहीं है, पर वो दूर से ही ऐसे कर देता है। सेंसर्स नहीं होते हैं, जब हम जाते हैं बायोमेट्रिक होता है, तो उसमें आप जाके अपना फेस टच नहीं करते, दूर से ही वो आपको रिकग्नाइज कर लेता है। उसी की कोई टेक्नोलॉजी है, मैं भी इंजीनियर नहीं हूं,
मुझे नहीं आता ठीक से, पर उसी की है. नाउ ही इज एंजॉयिंग दिस एंड इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कलर. सो दिस इज अ प्री नर्सरी चाइल्ड, बट कितना एंजॉय कर रहा है इसमें. स्टीफन हॉकिंस के बारे में तुम्हें पता ही है, कितने डिफिकल्ट फॉर्मूलाज वो करते थे उसके ऊपर, और सब टच भी नहीं, from a distance itself, because his motion was only this much possible. Next slide please. ये देखिए, बीच वाला देखिए. अगर कोई व्हील चेयर पे है, वो नीचे नहीं कर सकता, तो क्या हम टॉयज को वॉल पे चिपका सकते हैं? सो सिंपल ना. अब वो उस तरीके से खेल रहा है. आप नीचे वाला ही देखिए, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है इनकी, और डाइनिंग टेबल बिकॉज व्हील चेयर ऊंची है तो उन्होंने डाइनिंग टेबल की हाइट जो है इनके यहाँ इंक्रीज कर दी है, और ऑल मेंबर्स के लिए जो चेयर है वो थोड़ी सी रेस्ड है, और डबल कर दिया इन्होंने. देखिए, अगर हो सकता है उनके यहाँ और बच्चे होंगे तो उनके लिए ये थोड़ा सा डाउन है, और ये उसके लिए थोड़ा सा रेस्ड है. पूरी फैमिली एक साथ तो बैठ सकती है, एक साथ खाना खा रही है, and when they're eating together, they are bonding together, they're interacting with each other together. Have you seen this washroom here? See the mirror, it is at an incline. If I am on a wheelchair, तो ऐसा होगा, तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी पोजीशन पीछे वाली स्लाइड पे ही है हम अभी. मेरी पोजीशन जो है वो ऐसे होनी पड़ेगी. So even the mirror has been put on an incline. और ये तो आप देख ही रहे हैं सारे. ये देखिए कितना, और स्पेस जानी चाहिए व्हील उसमें, क्या कहते हैं, वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में. बहुत सी बार आप देखेंगे स्कूल में भी ये होता है, घर में भी ये होता है, 2 टॉयलेट्स बना लेते हैं. अगर आपके यहाँ एक बच्चा है आपकी फैमिली में या आपके स्कूल में जो कि व्हील चेयर पे है, तो उसके लिए 2 टॉयलेट की जगह एक ही टॉयलेट बना ली जाए. राइट. सो वो पतले टॉयलेट में जा ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि ये मैंने, क्योंकि वीडियो यूट्यूब से ले सकी थी मैं, कितनी अच्छी तरह से अरेंज किया. फैशन, हैप्पीनेस, ऑर्गेनाइजेशन, being with society, everyone wants it. Now, instead of having the hangers on top, वो नीचे है यहाँ पर. ये ऊंचा भी है तो यहाँ तक पहुंच रहा है. See this here, कि वो माइक्रोवेव भी यूज कर पा रहा है, उसके ऊपर वो रख दिया. शेल्फ्स उनकी जो है थोड़ी सी नीचे कर सकते हैं. So easy. It requires just thinking. So we are going to do this in schools. We are going to do this in homes also. Next में जब हम जाते हैं, अब आते हैं हम to children with autism. जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं, पहले लेक्चर्स में, पहले वेबिनार्स में हमने उनके बारे में पढ़ा था, एंड बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग सो मच अबाउट दैट. उनकी स्पेसिफिक बात क्या होती है? दे लाइक स्ट्रक्चर. चीज आज ऐसे हो रही है, कल भी वैसे होनी है, हर दिन वैसा ही स्ट्रक्चर होना है. chaos उनको नहीं पसंद, उनको चीजें आउट ऑफ प्लेस नहीं पसंद. इन होम्स में इवन इफ यू कीप you want to change the furniture in the drawing room, you have to tell the child again and again for weeks together कि हम सोफा यहाँ से शिफ्ट करके हम इधर की साइड लगाएंगे, नहीं तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है. तो स्ट्रक्चर इनके लिए बहुत जरूरी है. पर एट द सेम टाइम इनमें से many of them don't like to talk. Some of them can talk, but they don't like doing that. And some of them are non-verbal. तो हम अब देखते हैं आगे. तो उसमें देखिए यहाँ पर कैसा है, आगे चलते हैं और ये देखिए. अब चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ एक बात ये भी होती है, आइदर उनको उनके सेंसेस जो होते हैं ना, सेंसेस कौन से होते हैं हमारे? विजन, ऑडिटरी, स्मेल, टच, राइट. तो इसमें बहुत ज्यादा हाइपर होता है, सेंसिटिविटी होती है, या बहुत हाइपर होती है. अगर हम सन में जाके खड़े हों 12 o'clock पे, तो हमारी आंख जो है वो उसको ले नहीं पाएंगी, उस
हीट को, उस रेस को, तो ये हाइपर हो गया, तो सेंसिटिविटी हो गई। पर उसका इन बच्चों में क्या होता है, इनको हो सकता है खाली येलो कलर से ही, बिल्कुल जितना सन का होता है ना, हीट होती है, ये जो इंटेंसिटी हमें फील होती है, उसको एक येलो पेपर से ही उतनी फील हो सकती है। तो उनकी सेंसिटिविटी कलर के भी के साथ भी हो सकता है। वो कुछ कलर से इतना ज्यादा लगता है उनको, हो सकता है रेड कलर से उनको लगेगा जैसे आग आ रही है, या येलो कलर से भी हो सकता है, उनको किसी भी कलर से हो सकता है। हर बच्चे का फर्क है। And this is one reason you will find that in schools, sometimes the teacher says, every day he's so nice with me, but yesterday he pushed me. It could be just the color that you wore that day. The child was hypersensitive to that color. Okay, so that's one thing. Other is they like things in picture, structured sequence. So, morning, we generally say, मम्मा विल आस्क एंड से कि सुबह क्या करना है, पहले हमें उठना है, फिर हमें ब्रश करना है, फिर हमें ये करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है। हम वर्बली कर रहे हैं। यहाँ यू मेक कार्ड्स फॉर देम एंड दे विल पुट दीज कार्ड्स। तो हर चीज के लिए कार्ड्स बनाते हैं एंड दे यूज दोस कार्ड्स। क्लास में भी if they want to go to the washroom, so there's a toilet wala card, so they go and give it to the teacher. घर में कामिंग सूदिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी एक्टिविटीज इनको नहीं पसंद है। दे कांट टेक इट, इनको मेल्ट डाउन होता है। मेल्ट डाउन जैसे हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना किसी चीज से, पर वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरीके की चीज होती है, पर इनके कंट्रोल में नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो ये इनको मेल्ट डाउन होता है, फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। नेक्स्ट में हम जब देखते हैं, यहां देखिए हर चीज लेबल्ड है इनका। इनकी जो फर्नीचर है ऐसे घरों में वो भी लेबल कर देते हैं, तो हम भी करते हैं ये। सो सी व्हाट वाज आई सेइंग कि जो चीजें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जरूरी है वो हमें भी सपोर्ट करती है। Even I've labeled a lot of things in my house, so have you. But for them, it is even more. Next में हम देखते हैं, ये देखिए, ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें ये लिटिल गर्ल मम्मा के साथ अपना डेली शेड्यूल बना रही है। सब उसके पास पेग्स है, यहाँ पर पिक्चर्स है जिसको पेग कहता है, और वो यही लगे हुए हैं। यही चीज जो है टैब्स में, यानी एआई में, लैपटॉप्स में, ये टैब्स कहलाते हैं, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। इससे लेके ये पूरा सेंटेंस भी बना लेते हैं और आपको सेंटेंस बता देंगे, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले विद द फुटबॉल। तो ये सारे हैं, उनको वो यहाँ डाल के पूरा सेंटेंस आपके लिए बना दिया। तो इनके यहाँ इन फैमिलीज में ये होती है, पर हमें स्कूल में भी तो चाहिए ना ये। अगर हमको स्कूल वाले एज टीचर्स, वी आर द एक्सपर्ट्स, वी आर ट्रेन्ड, हमें पता है, तो हम इनकी फैमिलीज में इनको सपोर्ट कर सकते हैं इन चीजों के लिए। आगे जब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये देखिए एरो भी लगी हुई है। पहले यहां मैं इस समय यहां तक पहुंच गया हूं, वेरी क्लियर। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो ये देखिए, ये सारा चीजें वही है। नाउ लुक एट दिस चाइल्ड, सो हैप्पी। They do not like to interact too much with others. It doesn't mean that they are not intelligent. They are highly intelligent. They are very good with AI because AI does not answer them. They don't like using non-verbal. So AI doesn't give any non-verbal. So they are very good with that. आगे जब हम देखते हैं तो ये देखिए, अब आते हैं हम हियरिंग इम्पेयर्ड के। सब लोग अपना कान बंद करेंगे, फिर भी आपको देखेंगे कुछ आवाज अंदर जाती है। अगर मैं आपके घर आती हूँ
तो मैं क्या करती हूँ, बेल बजाती हूँ, अंदर साउंड जाता है, आप आते हैं कि कोई गेट पे है, आप गेट खोलते हैं, पर मैं सुन ही नहीं सकती हूँ। तो जब अगर आप बेल बजाएंगे तो मुझे क्या पता आप गेट पे खड़े हैं। तो उसके लिए देखिए, दो बेल्स के साथ यहां पर लाइट लगी हुई है। ऐसे ही जो फायर वाले होता है ना, हमारे यहाँ दिल्ली इंडिया में तो इतनी जरूरत नहीं है, बट एल्सवेयर फायर अलार्म्स लगे होते हैं। तो फायर अलार्म जो है वो रिंग करता है, अगर ज्यादा स्मोक अलार्म, अगर वो स्मोक ज्यादा हो जाता है, ओके। अब वो रिंग करेगा तो वो आवाज तो जा ही नहीं रही, क्योंकि दे कांट हियर। तो उसके लिए ये कलर आ जाता है इनका, या बीप साउंड्स। जैसे हमारे हम वाइब्रेटर, जब किसी मीटिंग में होते हैं, कुछ होते हैं, तो वाइब्रेटर पे लगा देते हैं ना, तो दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग दिस। ये अपनी वही है, डोरबेल जो है वो साथ में जहां भी जा रही है घर में, वो साथ में ले जा रही है। जब लाइट बीप हो रही है तो वो जा रही है और डोर खोल रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आगे हम देखते हैं ये, they can't hear. See, remember, we have the five senses. Major one are visual, auditory, tactile, tactile and kinesthetic. Olfactory जो कि स्मेल होती है वो इतनी यूज नहीं होती है। तो अगर ऑडिटरी नहीं हो सकता तो उसको कन्वर्ट करना है हमें विजुअल में या टच में। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसे डिवाइसेस बने हैं जिसमें वो स्मोक आ रहा है तो वो यहाँ पर स्मोक बोल रहा है, डोर बोल रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। अलार्म क्लॉक, हमारी अलार्म, हमने अलार्म लगाया 5:20 का, सो दे विल नॉट हियर इट ना, सो हियर इट इज अ साइलेंट अलार्म, रेड जाता जा रहा है। कैन यू सी हियर, इट्स गोइंग, red color is sparkling like this. Right? So this is the way. Next, when we go and we see what is happening here. So visual alarm systems, flashlights उनके घरों में होती हैं, हाँ, स्मोक वाइब्रेटर्स होते हैं, टेलीफोन के लिए अगेन वाइब्रेशन, डोरबेल के लिए कलर, इमरजेंसी अलार्म के लिए वाइब्रेशन एंड कलर, किचन में टाइमर्स कैसे लगते हैं, कितना डिफरेंट होता है। और ब्राइट नॉन स्लिप मैट्स, मैं सफेद बाल एल्डरली, मेरे घर में भी नॉन स्लिप मैट्स हैं। तो नॉन स्लिप मैट्स खाली चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस या हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी इफेक्टिव है। So what is for special children, homes of special children also helps me. Again, when we go forward, यहाँ देखा वही चीज, इंडियन साइन लैंग्वेज से ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज आती है जो स्कूल्स में यूज होती है, बच्चे के कान में मैग्नीफायर लगाया, टीचर ने एज अ नेकलेस उसको यहाँ पर पहन लिया। Now when the teacher is talking, rest of the children are hearing at the same frequency, but the child with hearing impairment, उसके लिए वो मैग्नीफाई हो गई। Such a simple device for an inclusive classroom, isn't it? So if you understood, what do we say? Thank you. Next slide. You take over for a second. Sorry. Same things. Can you see here? आगे चलते हैं हम। अब आए हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, न्यूरो डाइवर्सिटी है। इनका ब्रेन जो है वो डिफरेंट टाइप का है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं है। कभी आपके यहाँ होता है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं
या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने ये काम कर रहे हैं कुछ भी, आप अपने अपने टाइप से बंडल्स रखें। कोई और आता है घर में, कहते कितना कमरा खराब कर रखा है, आप कहते हैं नहीं मैंने अपनी तरह से अरेंज किया हुआ है, मैंने ये चीजें यहाँ रखी हैं, ये चीजें मैं अभी सॉर्ट कर रही हूँ, मैं इनको कवर में रखूंगी। दूसरे को वो कैटेगरीज जिसमें आपने रखा है सामान, वो समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा है। इसी प्रकार से द चिल्ड्रन विद एसएलडी, द वे दे कैटेगराइज थिंग्स is very different from the way we categorize things. So if you find the home or the bedroom or the room of a child with dyslexia cluttered like this, I can hear that. Yes, exactly. Even the normal, so-called typical normal children, उनके भी तो ऐसे ही होते हैं. Exactly. तो वही तो बात कह रहे हैं. किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को नॉर्मल लेवल से कम और किसी का कहीं ज्यादा. तो जिसका बहुत ज्यादा है वो एसएलडी कहलाने लगता है. नेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना है. नाउ अगेन द सेम थिंग, special education, just like teaching. I often say that special education is nothing but effective teaching. Similarly, anything that's being done in the home is nothing but which will help support everyone. So children with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, जो overall क्या है, specific learning disability, उनको कैटेगराइजेशन हमारे जैसे नहीं होता उनका. तो उनको क्या देने को बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बहुत आते हैं ना आजकल. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ. ये बच्चों को भी तो कहते हैं ना, इसमें सारे अपने खिलौने रखोगे, रेड में बुक्स रखोगे, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, सब ये भी कर दिया. तो इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, तो उनको इजी हो जाता है. उन्हें अपने ब्रेन में वो कैटेगरीज अलग अलग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. सो वी आर मेकिंग इट easier for them and for ourselves also. आगे जब हम चलते हैं, ये देखिए, द चाइल्ड विद एसएलडी की प्रॉब्लम क्या है. यस, वो फिगर ग्राउंड में उन्हें पता नहीं चलता. अगर क्लास में पढ़ रहे हैं और पंखे की आवाज आ रही है तो टीचर की आवाज ना सुन के वो दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द फैन. तो इंपॉर्टेंट क्या था, फिगर क्या थी, द वॉइस ऑफ द टीचर. ग्राउंड नॉइज क्या था, द नॉइज ऑफ द फैन. बट अब क्या हुआ, उसने गलती कर दी. तो उसके लिए ऐसे ही रीडिंग में ये प्रॉब्लम आती है. सो सी वी हैव दीज कलर्ड स्ट्रिप्स. ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना सब में, तो इसको हम रखते हैं. तो ओनली दोज 2 sentences आर सीन बाय द चाइल्ड. जब वो पढ़ लिए तो आगे आ गए, वो पढ़ लिए तो वो आगे आ गए. इसमें पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर लिख रहे हैं तब भी ये कर सकते हैं, ये उसी की स्ट्रिप है. एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसमें दिस इज अ टॉकिंग पेन. Does your parents know that there's a thing called a talking pen? Where to get it from? Now you can tell them. Talking pen में क्या है? It goes, उसमें रिकॉर्डिंग होती है उस चैप्टर की. And as you move this, the pen speaks out. इसका एक और एडवांटेज बताऊं मैं. Supposing the parents don't know English and it is an English book, the talking pen can have 2 recordings. One in English and one in the mother tongue. So the parents who may not be knowing the other language, many a times it happens, na? So they know exactly what the child is reading and accordingly they can help the child learn better. Yeah, now this is so common, you don't even need this. Up to everything is recorded on the mobile. So simple, you record it and there are apps which will convert it into writing. In CBSE also this is done now. The child with dyslexia, with autism gets a scribe, somebody who the child speaks out the answer and that person writes the answer.
So when you're making the child learn at home, the same thing can be done. Instead of making them write like this, the learning is through, this is called the bigger movements or the gross muscular movements. So we need to have these. छोटा सा ब्लैक बोर्ड दिखाया है यहाँ, ऐसे पूरे बड़े बोर्ड्स हैं. Many homes of children with SLD have those. आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं, अब आते हैं, बहुत सारी पिक्चर हो गई हैं और टाइम भी खत्म होने वाला होगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी से समराइज करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए. What are the main things? Remember, I'm repeating again. Anything that we do for children with special needs is also good for the other children. As I said, special education or general education is actually effective way of learning teaching process. So if you're more effective, it is everyone gets included, and that is what inclusion is about. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? As teachers, as principals, as parents, as others working in the area of child development and child education, we need to observe what are the interests of the children. Every child has different interest. What is their comfort area? Why does their behavior become of a particular type in particular situations? What causes those triggers? So I need to be able, then only I can give a solution. ना वो नहीं अपनी टेबल को ठीक से रख पाता है, तो can I do the organizers for the child so it becomes better for them? So जब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि एडल्ट जो हूँ उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, we will not be able to give them a solution. Identify developmental domain needing support. A child with hearing impairment needs support in being able to take advantage of the hearing, the noise, the voices. So we have to find a support which is not auditory, but which is something else. Similarly, for a child with dyslexia, you do not need support for hearing. Of course, with phonetics, yes, but general hearing. Instructions वो आराम से समझता है, ठीक है ना, पर लंबे instructions में problem होती है, वो और बात है. But what the child needs support in penning down the information. तो जिसको जिस चीज की जरूरत है पहले तो वो तो आइडेंटिफाई करे ना, देन तो उसके लिए हमारे पास आईपीज होते हैं, ये सब होता है. Accept and respect the child. Every human being, every living being is important, special, and has to be accepted. So whatever their diversities, accept them. I am not a NASA astronaut, so my family doesn't accept me. They're accepting me now as they are, and I'm accepting them as they are. तो वो हम bandwidth थोड़ी सी बढ़ाएं. Every child may not be super expert, but what they are, find those advantages. You know, parents, families who have children with IDT, intellectual developmental deficiency, disabilities, you ask them, हमारा बच्चा इतना सुंदर स्माइल करता है. They found something positive. You have to find positive things in everyone. And do not compare. Comparison is not what we should be doing. Leave it. Earlier people used to do it. Make them self-sufficient. Make them independent as much as they can be. Non-judgmental. जैसा है वैसा है. Develop a consistent routine without anxiety.
For example, 6:30 or 7 the school bus comes. It takes 1 hour for a child to get ready. So please get the child out of bed 1 hour earlier. Don't continue to think that अभी ये आधा घंटा और सोने दो. Because the time required is 1 hour, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा तो कंफर्ट लेवल तो रहेगा न, उसको एंजाइटी तो नहीं होगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी. So keep a routine which is consistent. Same for scolding children. If there's a rule in the family, then mostly keep that rule. If the rule has to be changed, then there has to be reasons provided why today the rule has been changed. Positive reinforcement. Don't criticize. तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में. No. Okay, doesn't look like you will be able to become a doctor, but I'm sure you'll become an artist. Okay, I think doctors earn more, but the artist will also survive. Now you're giving the child options. That is positive. Find the positivity in every situation. And remember, do not live your life through your child. Society will blame you. You can't change the society. But at least change yourself. Learn to get the best out of your child, but don't over push. But consistently, a certain amount of stress, positive stress, which is within limits, which is warm, which is non-judgmental, can be provided. Secure attachment and trust. Whatever my child, please tell the families, please tell the parents also. Trust and attachment is important. If you do not get 100 out of 100, it is not, we are not unhappy that you haven't got 100 out of 100, but you are still loved by the family, by the teachers, by the school system, is the message which needs to go across. Do not overload with things. And this is what's happening. Please remember, these are children with special needs, but they can also commit suicide. One of the major reasons for adolescent and young adults suicide rates, which are increasing in our country and reaching dangerous levels, is this over pushing by the education system or the family and the non-consistency. First, we pamper the child so much, and then suddenly we start putting too much pressure. There has to be a continuous warm pressure. Let the child feel secure, and the pressure has to be limited within the scope of the child from the beginning, not suddenly in class 10th and 11th. Offer opportunities to share play. Playtime, conversation time, daily engagement time should be there, which is non-judgmental. Laying the table. Oh, he's so young. He's only 5 years old. He's only 10 years old. How can he lay the table? Yes, why not? But if he doesn't do it very well, okay. ग्लास यहाँ रखा है, उसको यहाँ पर कर देंगे. ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? So that develops that attachment, bonding, trust. Physical environment. SLD child तो clutter करेगा ही, accept करो. Normal children भी clutter करते ही हैं. But for a child
who is on the autism spectrum disorder, a child who is visually impaired or blind, the space in the house has to remain surely non cluttered. Neither that confidence in oneself will go down. Even this child wants to run about, but they will not be able to do it effectively. So confidence goes down. Labeling, color codes, physical symptoms of identification. Let's start doing it. Tell your families to do it. See that you're doing it in your classrooms also. Then sensory friendly modifications. Child with autism spectrum disorder, visually impaired, उसको दिख रहा है पर बहुत नहीं दिख रहा, उसको सॉफ्ट लाइट, नेचुरल लाइट्स. कभी ऐसा हुआ है आप पूरे दिन घर के अंदर थे, बाद में बहुत घंटों बाद आप बाहर जाते हैं, कितना अच्छा फील होता है. That natural light is any day better than the best artificial light you can get. So the routine of the child has to be such that there is certain amount of natural light. It can just start with when you get up in the morning, go and see the sun. When you get up in the morning, go and water 2 plants. Automatically the child is going out into natural light. In Delhi, I understand the pollution is so much, so you can't get up many days in the morning and go out. But you can do it at 11 o'clock. The type of toys that you're giving the child, again, has to depend on the type of disability that the child has. Can we convert some toy which has sound as the main thing into light? What are the type of textures that are required for different children? We have already spoken about that. Will we have that? And have limited, overwhelming stimuli. Clear, simple, consistent language. Encourage expression. मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं तो पिक्चर से बोल रहे हैं, एक्शन से बोल रहे हैं, साइन लैंग्वेज से बोल रहे हैं, सब कुछ एक्सप्रेशन है ये ना. अंडरस्टैंड वो बिहेवियर ऐसे क्यों कर रहा है. You have to understand the process which is causing that end product, wrong behavior. Wrong behavior के ऊपर डांटना ठीक है, पर उस प्रोसेस को भी तो अंडरस्टैंड करना और चेंज करना बहुत जरूरी है. पनिशमेंट नहीं होनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना है, उसको दूसरे काम में लगवाना है. कोई जब ट्रांजिशन चाहिए, बस बहुत खेल लिया, 5 बजे तुम्हें खेलना बंद करना चाहिए, नहीं किया तो बहुत जोर से डांट पड़ गई. यू गेट अ स्लैप ऑल्सो विच इज वेरी रॉन्ग, नॉट अलाउड नाउ एट ऑल. यू कांट स्लैप एनी चाइल्ड, इवन योर ओन, बट इट इज हैपनिंग. सो इन दैट केस व्हाट यू डू इज you give them time. You have to wind up after 5 minutes. You have to wind up after 10 minutes. Social interaction सबके साथ. My child is not up to the level. I can't. What will people say? They will anyway say. So let at least your child interact with others. Give them parental care. You cannot be the only support system. Please be in touch. Make relationship with the extended family. They are safer than new friends that you have made. It's better to leave your child with an extended family who will come and tell you how bad a mother you are, as compared to a new neighbor whom you do not know anything about. Where is the child safer? You are not. You are being affected by that extended family's comments, but the child is safe. So please develop relationships. Sibling, involve them. They will be living together much longer period of years than you will be with the child.
know the child needs to know their rights, and you need to know the awareness of laws. So RPWD Act 2016 is one such law document that you must know very well. Plan for the future. अभी तो छोटा है, देखेंगे क्या होता है. No. तो strength base. Next is culture sensitive. What is applicable for us? Next. So these are the overall things that we have talked about: consistency, clarity, tactility, safety, independence. And we come to the last slide now. Thank you so much. Thank you so much, Renu ma'am. This was such an inspiring session. Now it is the time for the question and answer session. I request all our viewers on YouTube, kindly just put your questions in the YouTube chat box. So we have received a few questions, and I'll just say that out for it's all fine. I'm just going to zoom in on Renu Okay. ma'am so that she can answer the questions. So, ma'am, one of the questions that we received from a parent perhaps is that can you help with some simple low-cost tools or strategies that parents can use at home for daily challenges? Okay, now I have the entire session has been on very low cost things. I don't. It could be about toys itself. See, when you're talking about toys, don't ever go in for expensive toys. There is always a simpler version of that, because it's better to have a doll which the child can tear apart and you will not feel bad about it, as compared to get a very expensive doll. You can use boxes for games like stacking on each other instead of going and buying those boxes. You can have cardboard boxes, which is, and let the child write A, B, whatever, color it themselves, stick it on them, and then learn how to do word spellings on that, with that. After a while, they'll get spoiled, doesn't matter, let them throw it out. So these are some of the type ways you can do low cost things also. Use a old chart paper, newspaper, stick it on a wall. Have one wall in the house, which is a children's wall, which you will tell yourself, I'm not going to be bothered agar wahan ganda ho raha hai to. Put a newspaper there and let them color there. Let them play with sand. Uske baad wash kar dena, antiseptic laga dena unke upar. But let them do these things. That's very interesting, because I remember that I had taken a huge cardboard box, given it to my children, and we had cut windows. They used to color, paint. They sometimes even slept inside when they were very little. So it's a fun thing to do, and it comes at a low cost. So even if it's messy, it's all fine. And it can be thrown again. You can always get a new box. Yes, then you can get a new, which anyway comes without any money. So another question, some red flags that you would perhaps the parents want to know that could indicate that a child would need additional support. For example, in the case of children with autism, many of them grow as with the same developmental stages till say about age 2. Then it starts going down. If it is happening, immediately go and meet an expert. Go to the school system. They will be able to guide you in your cities where we have to go. Another child is not able to learn nursery rhymes. When they remove their slippers, they do not understand right में कौन सा जाना है, left में कौन सा जाना है. These are early indicators that the child might have SLD or dyslexia. But there's one is indicator, early red flags. One is an assessment.
Sometimes it might be just a developmental stage. There's a child who sometimes listens to you and sometimes doesn't. Next time, don't get upset. Rude hai, sunta nahi hai. Just go behind the child, try and call out the name of the child or say something to the child. The child doesn't listen. Then come in front and do the same, and the child listens. A clear red flag needs the hearing to be checked. And there can be many, many more for this. So, one very interesting question, and I must say, one very insightful parent has asked this. What are some common mistakes that parents unintentionally make when helping children with SLD, specific learning disability? The most common thing is expecting them to behave the way we behaved. Second is trying to insist, remember, reading, writing, arithmetic is not intelligence. Those are skills, which are human made skills. And the whole focus is on that. We are not looking at the other characteristics of the children. So focus that much only on that. 40% of the billionaires in the world are SLD. Majority were not able to pass school. So this is to say that school is focusing on development of reading, writing, arithmetic skills, not on life skills. Let the child tell you what their problem is. मुझे नहीं अच्छा लगता लिखने का, पर बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसके लिए तो लिखना कर पड़ेगा, तो क्या करें बताओ? Sit down, have a time with them. Let them be what they are, even if they do not reach your expectations. They will become something or the other if they are part of a family which has good attachment, where they develop their self-esteem good. You with their support, they will reach somewhere. All of them have. I think that goes with all parents and us in general. Patience is a virtue that we all need to absolutely absorb and imbibe. And remember, as Galib says, that they are not you. Yes, we have to let each child become themselves. Exactly. So we just need to be enablers. Another question, and I think we'll take this one last question. How can parents support communication if the child is non-verbal or has limited speech? Okay, of course, we have the experts who will help out with developing speech in a child who has communication issues. But there's a limit to that. If I have to go to a new country, what do? I pick up certain words. Others, what I also do is we write the sentence in English for myself or Hindi for myself and in the language there, and we show it to them. This is what I showed there, na? Picture cards. Do we have to go to the front of the classroom and say, ma'am, may I go to the toilet? Can we have just this indication that many schools have? Or could we have a picture of that? I want to drink water. Can we have a card picture of water in a mug or whatever else? So, another way of communication. Speech is not the only way of communication. Anyway, Indian 65% of our communication is non-verbal. Sign language is another. Look at me. I'm a teacher. I'm not able to keep my hands low and talk. What is it? This is a native sign language. All of us use it. When you are very irritated, you start using your hands also. And that has been made into a standardized sign language. So instead of speech,
some other way of communication. So it could be pet cards for children with autism. It could be sign language for children with hearing impairment. Lovely. I'm sorry, I'm going to take one more question because I think it's very pertinent. One is, what is the one small change parents can start today to support their child better at home? I think you've mentioned so many, how to pick out of that, but if you had to pick one. Next time you want to get upset at your child, count till 10 and then decide, do you want to get upset? Second is, can we have 15 minutes of non-AI technology time in the family? And can we try and start with trying to sit down together and having lunch or dinner together? It won't happen overnight. You will only be able to, I promise you, it will take you at least a month to get the family together, to sit together and have dinner. Parents will have to sacrifice a little from their professional life for this, I'm sure. That's wonderful. Those tips, I think, are for all of us as well. But that's all from our side. Akanksha ma'am, can I hand the mic over to you, or rather the screen over to you? Ji. Thank you so much, Renu ma'am, for such thoughtful questions and the answers also. So I would like to inform our viewers that our next webinar will be webinar number 9, that will be held on Friday, December 26, 2025 at 11 a.m. on the topic social inclusion and friendships, helping specially able students with build relationships. Do like, share and subscribe our YouTube channel to know more about our initiatives and more programs and all. Thank you everyone for joining us today. Your time, attention and participation truly made this session meaningful. Your support and enthusiasm inspire us to keep creating meaningful learning experiences. We hope the webinar helped you gain new insights and perspectives. Wishing you all a wonderful day ahead. Thank you so much all for joining us today.